कि आमर देशर अर्थनीति केते मात्रा बढ़ुची देश जो विश्व में चतुर्थ अर्थनीतिर से सफलता पाई सारी तेणु मुंड पिछा आय केमिति बढ़िबो एवं मुंड पिछा आय बढ़िबा सहित देशर रोजगार केमिति बढ़िबो देश केते आगो को जीवो ताहा आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जेतेबेले पेड़ी खोलिबे जेतेबेले बजेट उपस्थापन करिवे सेतेबेले समस्तक सामना को आसीबो। तेणु ए बजेट को नहीं जो आशा जो संभावना रही तापर आम नजर रही बजेट रे कौन आसीबो एवं बजेट रे निर्मला सीतारमण साधारण गोटे कृषक ठार आरंभ कर महिला पर्यंत एवं विभिन्न वर्गर लोकों पर्यंत सबुठी केमती कौन व्यवस्था करुछंती। तेणु एथर बजेट को नहीं अनेक किछि संभावना रही किंतु बजेट पूर्व जो चित्र देखा मिली बजेट रे एथर कौन प्रावधान रोचे बजेट आकार केते रोचे को वर्ग को केते मिलुछि ता पूर्व आज बजेट उपस्थापन करने को जीवा पूर्व अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को आपण देखुथिले केमती कांजीवरम रो साड़ी पिंधिछंती एवं हाथ रे से नाली फाइल रही जदियो आकु बही खाता बोली कहा जाउ नाही एबे टैबलेट रे बजेट उपस्थापन कर जाउछि। तेणु आज रविवार ये बजेट उपस्थापन को नहीं बजेट को नहीं उत्साह रही संविधान ने वार्षिक बजेट रही बजेट पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जेतेबेले साक्षात करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सेतेबेले राष्ट्रपति तांकु दही चीनी खुआइबार परंपरा मध्य रही तेणु दही चीनी खुआई तांकु ये स्वागत करथिले बजेट को उपस्थापना करने बधाई जन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पाखरे ही प्रथमे ए बजेट को नहीं रखा जाए प्रेजेंट करा जाए जहां अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सहित अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी रही तेरे बजेट उपस्थापन करने पूर्व या संपूर्ण भाव में गोपन रखा जाए अनेक दिन धरी बजेट को प्रस्तुत करी पूरा अर्थ मंत्रालय पूरा टीम निर्मला सीतारमण पूरा टीम एवं बजेट प्रस्तुत होगा हालुआ बनइबार परंपरा थाए जमिति आमर परंपरा रे सब बेले कह जाए कि मिठारू किसी जिनस को आरंभ करा जाए तेणु बजेट समाप्त होगा पर हालुआ बनइबार परंपरा रही है जो हालुआ बनइबार चित्र मध्य आमे विभिन्न समय देखी तेणु एथर जेहेतु बजेट आसूची बजेट रे अभिभाषण केते हम दुईटी पर्यायर बजेट प्रथम एवं द्वितीय पर्यायर जो बजेट आसीबो ए बजेट रो अभिभाषण केते लंबा हबो एवं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ए अभिभाषण केते समय रहबो कारण 2020 रो जो तथ्य रहितला जो अभिभाषण संसद रहितला ताहा पाखापाखि 2 घंटा 42 मिनिट रहितला निर्मला सीतारमण ए बजेट रो स्पीच तेणु एबे से बजेट रे जेतेबेले आगत करिवे निर्मला सीतारमण ए बजेट रे केते समय पर्यंत अभिभाषण रखिवे एवं ए लंबा बजेट रे कौन कौन तथ्य निर्मला सीतारमण देशवासी रखा जाउछंती तापर मध्य नजर रही मु किछि तथ्य मध्य आपन सामना रखुछि कारण आज बजेट आसुछि एवं बजेट रे आज जेतु रविवार आसुछि रविवार रे बजेट उपस्थापन होउछि आज रविवार रे शेयर मार्केट मध्य देशर बजेट एवं बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण प्रथमे अर्थ मंत्रालय गले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थ मंत्रालय परे राष्ट्रपति भवन गले राष्ट्रपति बजेट को अनुमोदन कले राष्ट्रपति एवं द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर कैबिनेट बैठक बसी एवं कैबिनेट बैठक सरी सारी लोकसभा आगत हेब 2026-27 बजेट एवं शेष हो सारी कैबिनेट बैठक समय बड़ खबर कैबिनेट रे बजेट को लेकर आलोचना करा जायतिला एवं आलोचना सरी सारी आ किछि समय मध्य प्राय 12 ରୁ 15 मिनिट मध्य उदित नवम थर पई निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करने जाउछंती एवं एई बजेट रे गोटे बड़ यूनिकनेस एया रही जे पार्ट ए को फोकस कम आ पार्ट बी को संपूर्ण रूप से निर्मला सीतारमण पढ़ाई जाउछंती जो थे वेलफेयर स्कीम्स रहिबो जो थे सरकार तरफ अनेक गुड़िए नुआ योजना दिया एवं से योजना रे केते एलोकेशन करा जाउची से सूचना मध्य आमे 12 मिनिट 15 मिनिट रे पाइबा पाई जाउछु उदित आमे मानस न्यूज 18 रो ये न्यूज डेस्क रे विभिन्न स्टूडियो के यूज करूछु विभिन्न प्लेटफॉर्म के यूज करूछु एवं पूरा अत्याधुनिक उपाय रे से तथ्य को दर्शकों का आगे आणुछु देश वर्तमान से दिगर मध्य आग को बढ़ुची अपन प्रधानमंत्री मोदी को देखि पारुछंती बड़ विजन रही एआई क्षेत्र रे एवं माइक्रोचिप क्षेत्र रे सेमीकंडक्टर क्षेत्र रे केमती देश आग को बढ़ुची तार मध्य एक उदित कथा प्रधानमंत्री कहितिले मध्य जे आमे एआई को नेकरी टेक्नोलॉजी को नेकरी सूचना
साधारण लोक कौन पाइबे मध्यवित्त कौन पाइबे ता सहित बड़ बड़ जो अर्थनीति को बूस्ट देउथबा हमर शिल्प उद्योग कारखाना तांको कौन मिलिबो कारण मोदी सरकार को ये हूँ तृतीय टर्म रो बजेट कारण 2014 रे जेतेबेले मोदी सरकार को प्रथम बजेट उपस्थापन कर जायथिला आकार थिला पाखापाखि 18 लाख कोटी एबे ताहा 3 गुणारु अधिक बढ़ी गलानी अर्थात 50 लाख कोटी रु अधिक हलानी गला वर्ष ए सीमा सर्वाधिक थिला अर्थात बजेट जो आकार थिला ताहा सबु वर्ष को टपी थिला अर्थात धीरे धीरे देश प्रगति रे आगो को बढ़ुछि एवं ये अर्थनीति बा देशर ये बजेट ही सूचना दउछि कि हमर देशर अर्थनीति केते मात्रा बढ़ुछि देश जोठी विश्व रे चतुर्थ अर्थनीतिर से सफलता पाई सारी तेणु मुंड पिछा आय केमिति बढ़िबो एवं मुंड पिछा आय बढ़िबा सहित देशर रोजगार केमिति बढ़िबो देश केते आगो को जीवो ताहा आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जेतेबेले पेड़ी खोलिबे जेतेबेले बजेट उपस्थापन करिवे सेतेबेले समस्तक सामना को आसीबो तेणु ए बजेट को नहीं जो आशा जो संभावना रही ता उपरे आम नजर रही बजेट रे कोन आसीबो एवं बजेट रे निर्मला सीतारमण साधारण गोटे कृषक ठार आरंभ कर महिला पर्यंत एवं विभिन्न वर्गर लोकों पर्यंत सबुठी केमती कौन व्यवस्था करुछंती तेणु एथर बजेट को नहीं अनेक किछि संभावना रही किंतु बजेट पूर्व जो चित्र देखा मिली बजेट रे एथर कौन प्रावधान रोचे बजेट आकार केते रोचे को वर्ग को केते मिलुछि ता पूर्व आज बजेट उपस्थापन करने को जीवा पूर्व अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को आपण देखुथिले केमती कांजीवरम रो साड़ी पिंधिछंती एवं हाथ रे से नाली फाइल रही जदिओ आकु बही खाता बोली कहा जाउ नाही एबे टैबलेट रे बजेट उपस्थापन कर जाउछि तेनु आज रविवार रो ये बजेट उपस्थापन को नहीं बजेट को नहीं उत्साह रही संविधान ने वार्षिक बजेट रही बजेट पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जेतेबेले साक्षात करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सेतेबेले राष्ट्रपति तांकु दही चीनी खुआइबार परंपरा मध्य रही तेणु दही चीनी खुआई तांकु ये स्वागत करथिले बजेट को उपस्थापना करने बधाई जनाइथिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पाखरे ही प्रथमे ए बजेट को नहीं रखा जाए प्रेजेंट करा जाए जहां अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांको सहित अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी मध्य रही तेबे बजेट उपस्थापन करने पूर्व या संपूर्ण भाव में गोपन रखा जाए अनेक दिन धरी बजेट को प्रस्तुत करिथांती पूरा अर्थ मंत्रालय पूरा टीम निर्मला सीतारमण पूरा टीम एवं बजेट प्रस्तुत होगा पर हालुआ बनइबार परंपरा थाए जेमिति आमर परंपरा रे सब बेले कहा जाए कि मिठारू किसी जिनस को आरंभ करा जाए तेणु बजेट समाप्त होगा पर हालुआ बनइबार परंपरा रही है जो हालुआ बनइबार चित्र मध्य आमे विभिन्न समय देखी तेणु एथर जेहेतु बजेट आसुची बजेट रे अभिभाषण केते हम दुईटी पर्यायर बजेट प्रथम एवं द्वितीय पर्यायर जो बजेट आसीबो ए बजेट अभिभाषण केते लंबा हबो एवं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ये अभिभाषण केते समय रहबो कारण 2020 रो जो तथ्य रहितला जो अभिभाषण संसद रहितला ताहा पाखापाखि 2 घंटा 42 मिनिट रहितला निर्मला सीतारमण ये बजेट स्पीच तेणु एबे से बजेट रे जेतेबेले आगत करिवे निर्मला सीतारमण ए बजेट रे केते समय पर्यंत अभिभाषण रखिबे एवं ए लंबा बजेट रे कौन कौन तथ्य निर्मला सीतारमण देशवासी रखा जाउछंती ता पर मध्य नजर रही मु किछि तथ्य मध्य आपन सामना रखुछि कारण आज बजेट आसुछि एवं बजेट रे आज जेतु रविवार आसुछि रविवार रे बजेट उपस्थापन होउछि आज रविवार रे शेयर मार्केट मध्य देशर बजेट एवं बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण प्रथमे अर्थ मंत्रालय गले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थ मंत्रालय परे राष्ट्रपति भवन गले राष्ट्रपति बजेट को अनुमोदन कले राष्ट्रपति एवं द्रौपदी मुर्मू यहाँ परे कैबिनेट बैठक बसी एवं कैबिनेट बैठक सरी सारी लोकसभा आगत हेब 2026-27 बजेट एवं शेष हो सारी कैबिनेट बैठक समय बड़ खबर कैबिनेट रे बजेट को लेकर आलोचना करा जायतिला एवं आलोचना सरी सारी आ किछि समय मध्य प्राय 12 ରୁ 15 मिनिट मध्य उदित नवम थर पई निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करबा पई जाउछंती एवं एई बजेट रे गोटे बड़ यूनिकनेस एया रहिछि जे पार्ट ए को फोकस कम आ पार्ट बी को संपूर्ण रूप से निर्मला सीतारमण पढ़ा जाउछंती जो थे वेलफेयर स्कीम्स रहिबो जो थे सरकार को तरफ अनेक गुड़िए नुआ योजना दिया एवं से योजना रे केते एलोकेशन करा जाउची से सूचना मध्य आमे 12 मिनिट 15 मिनिट रे पाइबा पाई जाउछु उदित आमे मानस न्यूज 18 रो ये न्यूज डेस्क रे विभिन्न स्टूडियो के यूज करूछु
विभिन्न प्लाटफॉर्म को यूज करूछु एवं पूरा अत्याधुनिक उपाय रे से तथ्य को दर्शकों आगे आणुछु। देश वर्तमान से दिगर मध्य आग को बढ़ुची। आपण प्रधानमंत्री मोदी को देखि पारुछंती बड़ विजन रही एआई क्षेत्र रे एवं माइक्रोचिप क्षेत्र रे सेमीकंडक्टर क्षेत्र रे केमती देश आग को बढ़ुची तार मध्य एक उदित कथा प्रधानमंत्री कहितिले मध्य जे आमे एआई को नेकरी टेक्नोलॉजी को नेकरी सूचना साधारण लोक कौन पाइबे मध्यवित्त कौन पाइबे ता सहित बड़ बड़ जो अर्थनीति को बूस्ट देउथबा हमर शिल्प उद्योग कारखाना तांको कौन मिलिबो। कारण मोदी सरकार को ये होची तृतीय टर्म रो बजेट। कारण 2014 रे जेतेबेले मोदी सरकार को प्रथम बजेट उपस्थापन कर जायथिला आकार थिला पाखापाखि 18 लाख कोटी। एबे ताहा 3 गुणारु अधिक बढ़ी गलानी अर्थात 50 लाख कोटी रु अधिक हलानी। गला वर्ष ए सीमा सर्वाधिक थिला अर्थात बजेट जो आकार थिला ताहा सबु वर्ष को टपी थिला। अर्थात धीरे धीरे देश प्रगति रे आगो को बढ़ुची एवं ये अर्थनीति बा देशर ये बजेट ही सूचना दउची कि हमर देशर अर्थनीति केते मात्रा बढ़ुची। देश जोठी विश्व रे चतुर्थ अर्थनीतिर से सफलता पाई सारी तेणु मुंड पिछा आय केमिति बढ़िबो एवं मुंड पिछा आय बढ़िबा सहित देशर रोजगार केमिति बढ़िबो देश केते आगो को जीवो ताहा आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जेतेबेले पेड़ी खोलिबे जेतेबेले बजेट उपस्थापन करिवे सेतेबेले समस्तक सामना को आसीबो। तेणु ए बजेट को नहीं जो आशा जो संभावना रही ता उपरे आम नजर रही बजेट रे कोन आसीबो एवं बजेट रे निर्मला सीतारमण साधारण गोटे कृषक ठार आरंभ कर महिला पर्यंत एवं विभिन्न वर्गर लोकों पर्यंत सबुठी केमती कौन व्यवस्था करुछंती। तेणु एथर बजेट को नहीं अनेक किछि संभावना रही किंतु बजेट पूर्व जो चित्र देखा मिली बजेट रे एथर कौन प्रावधान रोचे बजेट आकार केते रोचे को वर्ग को केते मिलुछि ता पूर्व आज बजेट उपस्थापन करने को जीवा पूर्व अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को आपण देखुथिले केमती कांजीवरम रो साड़ी पिंधिछंती एवं हाथ रे से नाली फाइल रही जदियो आकु बही खाता बोली कहा जाउ नाही एबे टैबलेट रे बजेट उपस्थापन कर जाउछि। तेणु आज रविवार ये बजेट उपस्थापन को नहीं बजेट को नहीं उत्साह रही संविधान ने वार्षिक बजेट रही। बजेट पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जेतेबेले साक्षात करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सेतेबेले राष्ट्रपति तांकु दही चीनी खुआइबार परंपरा मध्य रही। तेणु दही चीनी खुआई तांकु ये स्वागत करथिले बजेट को उपस्थापना करिबा पई बधाई मध्य जणाइथिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति पाखरे ही प्रथमे ए बजेट को नहीं रखा जाए प्रेजेंट करा जाए जहां अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांको सहित अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी मध्य रहिथिले। तेबे बजेट उपस्थापन करिबा पूर्व याकू संपूर्ण भाव में गोपन रखा जाए। अनेक दिन धरी बजेट को प्रस्तुत करिथांती पूरा अर्थ मंत्रालय पूरा टीम निर्मला सीतारमण पूरा टीम एवं बजेट प्रस्तुत हेबा परे हलवा बनैबार परंपरा थाए। जेमिति आमर परंपरा रे सब बेले कहा जाए कि मिठारू किसी जिनस को आरंभ करा जाए। तेणु बजेट समाप्त होगा परे हलवा बनैबार परंपरा रही है जो हलवा बनैबार चित्र मध्य आमे विभिन्न समय देखिछंती। तेणु एथर जेहेतु बजेट आसुची बजेट रे अभिभाषण केते हम दुईटी पर्यायर बजेट प्रथम एवं द्वितीय पर्यायर जो बजेट आसीबो ए बजेट रो अभिभाषण केते लंबा हबो एवं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ये अभिभाषण केते समय रहबो। कारण 2020 रो जो तथ्य रहितला जो अभिभाषण संसद रहितला ताहा पाखापाखि 2 घंटा 42 मिनिट रहितला निर्मला सीतारमण ये बजेट स्पीच। तेणु एबे से बजेट रे जेतेबेले आगत करिवे निर्मला सीतारमण ए बजेट रे केते समय पर्यंत अभिभाषण रखिवे एवं ए लंबा बजेट रे कौन कौन तथ्य निर्मला सीतारमण देशवासी रखा जाउछंती ता पर मध्य नजर रही। मु किछि तथ्य मध्य आपन सामने रखुछि कारण आज बजेट आसुछि एवं बजेट रे आज जेतु रविवार आसुछि रविवार रे बजेट उपस्थापन होउछि। आज रविवार रे शेयर मार्केट मध्य देशर बजेट एवं बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। प्रथमे अर्थ मंत्रालय गले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थ मंत्रालय परे राष्ट्रपति भवन गले राष्ट्रपति बजेट को अनुमोदन कले राष्ट्रपति एवं द्रौपदी मुर्मू यहाँ परे कैबिनेट बैठक बसी एवं कैबिनेट बैठक सरी सारी लोकसभा आगत हेब 2026-27 बजेट एवं शेष हो सारी कैबिनेट बैठक समय बड़ खबर कैबिनेट रे बजेट को लेकर आलोचना करा जायतिला एवं आलोचना सरी सारी आ किछि समय मध्य प्राय 12 ରୁ 15 मिनिट मध्य उदित नवम थर पई निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करिबा पई जाउचंती एवं एई बजेट रे गोटे बड़ यूनिकनेस एया रहिछि जे पार्ट ए को फोकस कम
आउ पार्ट बी को संपूर्ण रूप से निर्मला सीतारमन पढ़ा जाउछंती जो थे वेलफेयर स्कीम्स रहिबो जो थे सरकार तरफ अनेक गुड़िए नुआ योजना दिज्व एवं से योजना रे केते एलोकेशन करा जाउची से सूचना मध्य आमे 12 मिनिट 15 मिनिट रे पाइबा पाई जाउछु उदित आमे मानस न्यूज 18 रो ये न्यूज डेस्क रे विभिन्न स्टूडियो के यूज करूछु विभिन्न प्लेटफॉर्म के यूज करूछु एवं पूरा अत्याधुनिक उपाय रे से तथ्य को दर्शकों का आगे आणुछु देश वर्तमान से दिगर मध्य आग को बढ़ुछि आपण प्रधानमंत्री मोदी को देखि पारुछंती बड़ विजन रहिछि एआई क्षेत्र रे एवं माइक्रोचिप क्षेत्र रे सेमीकंडक्टर क्षेत्र रे केमती देश आग को बढ़ुछि तार मध्य एक उदित सेही कथा प्रधानमंत्री कहितिले मध्य frames through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's semiconductor mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans.
Tex Eco initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREADS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREADS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT-MSE for invoice discounting on TREADS platform. 3. Link GEM with TREADS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREADS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs),
and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is tier 2, tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, RITES have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated RITES. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C. Launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on tier 2, tier 3 cities and even temple towns which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7
high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals
have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income.
including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, viability gap funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences, 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in
Araku Valley in the Eastern Ghats, and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka and Kerala. And 3. Bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallu, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A. A credit-linked subsidy program. B. Scaling up and modernization of livestock enterprises. C. Enhanced creation of livestock, dairy, and poultry. I'll read that again. Enhanced creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains. And D. Encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in Northeast,
and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail. A little hide, a little seek, a little smile, a little peek. Whoa, oh, oh, whoa, oh. A little hide, a little seek, a little tease before we speak. Whoa, oh, oh, whoa, oh. मैं महिलाओं को ऋण आधारित आजीविका से उद्यमों का स्वामी बनाने के लिए अगला कदम उठाने में मदद करने का प्रस्ताव करती हूं। संवर्धित और नवाचार वित्त पोषित लिखतों के माध्यम से क्लस्टर स्तरीय संघों के भीतर सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट के रूप में स्व सहायता उद्यम शी मार्ट स्थापित किए जाएंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण, दिव्यांगजन कौशल योजना, आईटी, एबीजीसी क्षेत्र, आतिथ्य और खाद्य एवं पेय क्षेत्र, कार्य उन्मुखी तथा प्रक्रिया आधारित भूमिका प्रदान करते हैं जो दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त है। हम प्रत्येक दिव्यांग समूह के लिए उद्योग संगत और अनुकूल विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका के अवसर सुनिश्चित करेंगे। दिव्यांग सहारा योजना सभी पात्र दिव्यांगजनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों तक समय से पहुंच एक मूलभूत आवश्यकता है। मैं पहला सहायक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने, अनुसंधान और विकास तथा एआई एकीकरण में निवेश के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ALIMCO को सहायता उपलब्ध कराने, दूसरा पीएम दिव्यासा केंद्रों को मजबूत करने और आधुनिक रिटेल स्टाइल केंद्रों के रूप में सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट की स्थापना में
सहायता का प्रस्ताव करती हूं, जहां दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक सहायक उत्पादों को देख, परख और खरीद सकें। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए हमारी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि। उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है, इसलिए हम निमहांस 2 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन भी करेंगे। आपातकालीन स्थिति में परिवारों, विशेष रूप से गरीब और कमजोर लोगों को अप्रत्याशित व्यय का सामना करना पड़ता है। हम 50% जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर केंद्रों की स्थापना करके इन क्षमताओं को सुदृढ़ करेंगे और उन्हें बढ़ाएंगे। पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान। पूर्वोदय, मैं दुर्गापुर में बेहतर संपर्क लोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर के विकास, 5 पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण और 4000 ई बसों के प्रावधान का प्रस्ताव करती हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध स्थल। पूर्वोत्तर क्षेत्र थेरावड़ा और महायान वज्रयान परंपराओं का सभ्यता संगम है। मैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास हेतु एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। इस स्कीम में मंदिरों और मठों का संरक्षण, तीर्थस्थल भाषांतरण केंद्र, संपर्क एवं तीर्थयात्रियों की सुविधाएं शामिल होंगी। 16वां वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग ने दिनांक 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। संविधान के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत दिए गए अध्यादेश के अनुसार सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ यह रिपोर्ट संसद में रखेगी। सरकार ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सत्र की शुरुआत के साथ आप उसकी अनुमति देंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। सरकार ने 41% की दर पर अंतरण के ऊर्ध्व हिस्से को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। आयोग की सिफारिश के अनुसार मैंने वित्त आयोग अनुदानों के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल हैं। राजकोषीय समीकरण। सरकार सामाजिक आवश्यकताओं पर समझौता किए बिना लगातार हमारी राजकोषीय वचनबद्धताओं को पूरा करती रही है। राजकोषीय प्रबंधन के स्वीकार्य मानकों को पूरा करने के लिए बजट 2025-26 में मैंने संकेत दिया था कि केंद्र सरकार वर्ष 2030-31 तक 50 में, जिसमें ±1% के ऋण से जीडीपी अनुपात तक पहुंचने का लक्ष्य रखेगी। इसके अनुरूप ऋण से जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1% की तुलना में बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी के 55.6% रहने का अनुमान है। गिरता हुआ ऋण से जीडीपी अनुपात धीरे धीरे ब्याज भुगतान पर व्यय को कम करके प्राथमिक क्षेत्र के टिंग टिंग मां मेसेज मु आपणक मौसांक ककांक नातीर अणनाती बाहागर कार्ड मेसेज रे पठेइछि। डाउनलोड करंतु और आशीर्वाद दियंतु। मु तो तुमको चिन्हिनी तथापि बाहागर कार्ड खोलिबी। मु मूर्ख नुहे। बहुत बुद्धिया मां। यूपीआई कहूची जदि के अजाना नंबर रु फाइल बा लिंक पठाउची तो क्लिक करंतुनी। कहंतु मु मूर्ख नुहे। जानतु आपण भी कहारो टेस्ट नियंतु। आगे ने विधान तापरे शासन।
प्लीज चीनी एई असल धन जीरो एडेड सुगर रे परिव मन 20 फार्म पैटेड बेरे जीरो एडेड सुगर खाओ मन भरी की 250 ग्राम किणंतु 5 to 30 ग्राम हाफ हाफ मागणा। संशोधित अनुमान 2025-26 गैर ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 34 लाख करोड़ है, जिसमें से केंद्र की निवल कर प्राप्तियां 26.7 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 49.6 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 11 लाख करोड़ है। बजट अनुमान 2026-27 वर्ष 2026-27 की आते हुए गैर ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय का अनुमान क्रमशः 36.5 लाख करोड़ और 53.5 लाख करोड़ है। केंद्र की निवल कर प्राप्तियां का अनुमान 28.7 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण हेतु दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारी का अनुमान 11.7 लाख करोड़ है। शेष वित्त पोषण छोटी बचतों और अन्य स्रोतों से आने की संभावना है। सकल बाजार उधारी का अनुमान 17.2 लाख करोड़ है। अब मैं भाग ख की ओर बढ़ती हूं। भाग ख प्रत्यक्ष कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रत्यक्ष करों पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगी। नया आयकर अधिनियम। जुलाई 2024 में मैंने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया और आयकर अधिनियम 2025 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। करदाताओं को स्वयं को अपनी अपेक्षाओं से भली भांति परिचित होने के लिए पर्याप्त समय देते हुए इस सरलीकृत आयकर नियमावली और प्रपत्रों को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। प्रपत्र को इस प्रकार पुनः डिजाइन किया गया है कि आम नागरिक इसे बिना किसी कठिनाई के इसका अनुपालन कर सके। जीवन जीने की सुगमता। मैं प्रस्ताव करती हूं कि किसी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी और इस मद में कोई स्रोत पर काटा गया कर नहीं होगा। मैं विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा 5% और 20% से कम करते हुए 2% करने का